Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Have you ever wondered why certain carbon compounds are readily consumed while other carbon compounds are deadly poison for us? Some carbon compounds are good fuels while other carbon compounds not so. So in today's session, we are going to dive deep into the world of carbon. Let's start. So the first one that we are going to take are alcohols. Alcohols की homologous series का first member is methanol and the second member is ethanol. According to their structure, methanol is made up of only one carbon atom, whereas ethanol is made up of two carbon atoms. सबसे पहले ethanol को detail में समझते हैं. Ethanol, which is also known as ethyl alcohol, हमारी industries में और hospitals में बहुत use होता है. अगर 100% pure ethanol है तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल. अब क्योंकि ये इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स में यूज होता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करती है एट सब्सिडाइज्ड प्राइस. एंड सब्सिडाइज्ड प्राइस का मिसयूज ना हो, इसीलिए इथेनॉल में हम मिला देते हैं मीथेनॉल. और जब इथेनॉल में मीथेनॉल मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल. डीनेचर्ड मतलब इसके नेचर को खराब कर दिया. अब ये बाकी पर्पसेस के लिए तो बिल्कुल ठीक है, बट कंजम्पशन के लिए बहुत खतरनाक है. वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उन सब में इथेनॉल यूज होता है, और इथेनॉल का कंजम्पशन इज नॉट दैट डेंजरस. बट मीथेनॉल का कंजम्पशन कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ. द क्वेश्चन इज व्हाई. नाउ मीथेनॉल जब बॉडी में जाता है तो ये ब्रेक डाउन होता है into very toxic substances like formaldehyde. But ethanol इतने dangerous substances में break down नहीं होता, and that makes all the difference. Let's talk about the problems associated with the consumption of ethanol. Ethanol is an active substituent of all alcoholic drinks. अब इन alcoholic drinks के consumption से there are three main problems which are associated. The physical problems, the mental problems, and the social problems. Let's talk about the physical problems first. The physical problems are the problems associated with our brain, liver, pancreas, and heart. Overt consumption, long time consumption of alcoholic drinks causes problem with all these body organs and many more. Let's talk about the mental problems. The first and the foremost mental problem is addiction. All these alcoholic drinks are addictive in nature. It causes addiction. It also causes problems such as mood swings. Let's talk about the social problems. These alcoholic drinks cause problems in your friends and family. That is a social problem which is associated with these drinks. The consumption of ethanol is associated with mental, social, and physical problems. But the same ethanol is used in cough syrups and tincture iodine. कैसे? The key is amount. Tincture iodine or even consumable cough syrups use a very small amount of it, but consumption of large amount of this ethanol is very dangerous. Now let's move to acids. Ethanoic acid. Ethanoic acid का जो melting point होता है वो होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस. अब इससे एक इंटरेस्टिंग चीज बनती है. जब भी विंटर्स होती हैं तो विंटर्स में जो एसिटिक एसिड होता है वो फ्रीज कर जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है. और जब ये फ्रीज करता है तो ये ग्लेशियर जैसी अपीयरेंस देता है, और इसी ग्लेशियर जैसी अपीयरेंस की वजह से हम इथेनोइक एसिड को कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बिकॉज इट रिजेंबल्स ग्लेशियर्स. A very important question that usually comes in everyone's mind. हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? आइए समझते हैं. द फर्स्ट इज लिटमस टेस्ट. क्योंकि इथेनॉल एसिडिक और बेसिक नहीं होता, इसीलिए वो लिटमस टेस्ट नहीं देता. बट इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड एंड इट गिव्स लिटमस टेस्ट. ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा. अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. नाउ इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा,
बट इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड. इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट कैन बी टेस्टेड व्हिच विल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड. नाउ लेट्स सी how scientists test the presence of hydrogen and carbon dioxide to test whether a given substance was there or not. Let's talk about carbon dioxide first. Carbon dioxide is passed through lime water. और जैसे ही ये carbon dioxide lime water में जाती है, the lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate. Let's talk about hydrogen now. Hydrogen can be tested by using a burning matchstick. जैसे ही हम मैचस्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. और जैसे ही ये पॉप की आवाज आई, हमें पता लग गया कि हाइड्रोजन गैस बन गई है. सो वी हैव कवर्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे. नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू. You have to find out the real life applications of ethanol and ethanoic acid around you. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.